Hey everyone, good afternoon. Welcome once again to this session with Learn Fatafat. तो ये सेशन है फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आज हम टर्म टू क्वेश्चन के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी. So statistics and probability, under this heading you have only this chapter probability और ये आने वाला है आपको टर्म 2 में फॉर 4 मार्क्स. एंड अगर आपने चैप्टर देखा भी होगा तो उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है एंड ये सुना भी होगा कि प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी चैप्टर. ये क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, सेम चैप्टर. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी. व्हाट डज इट मीन? बहुत सारे टर्म्स जो यूज होते हैं इस चैप्टर में वो भी देखेंगे, उनका मीनिंग भी समझ लेंगे, so that you will have no problem when you do this chapter in class 10th also. Okay, एग्जाम्पल्स देखेंगे और उससे हर टर्म का मीनिंग भी समझ लेंगे. जैसे आपने बहुत सारे टर्म्स सुने होंगे लाइक इवेंट related to this chapter, probability, trial, outcomes, possible outcomes, favorable outcomes, then sample space. तो ये सब क्या होता है और ये कैसे फाइंड करना है and what is the actual meaning, everything you will learn today. So just keep tuned, stay tuned with me till the end and let's begin with the session. So let's learn फटाफट. पहला सेशन है आज प्रोबेबिलिटी का, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर वेयर वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट द टर्म्स. सो आई विल शो यू वीडियो और उसमें हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में. ओके, सो chance and probability. Okay, so let us see 1 minute. Okay, तो यहाँ पे देखो, अब आप 3 क्वेश्चंस देखोगे यहाँ पे. What is the first question? The first question, second question and third question. इसको पूरा आने देते हैं and then we'll see what are the questions. Okay, what first question में पूछा है, if you count the number of sides of a square, will the count be 4? What do you think will the answer be for this one? ये तीनों क्वेश्चन का हम आंसर देते रहेंगे साथ के साथ. ओके, दीज आर वेरी वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस. तो इफ यू काउंट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, विल द काउंट बी 4? यस और नो? तो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ये तो 4 होने ही हैं, isn't it? So my answer to this question will be yes. What about the second one? Second question है, if an odd number is divided by 2, will the remainder be 0? So what do you think about this answer? तो एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी ऑड नंबर का एग्जाम्पल ले लो. ऑड नंबर्स तो 2 से डिविजिबल होते नहीं है, दिस यू वेरी वेल नो. तो अगर मैं 3 का एग्जाम्पल ले लूं, 3 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, सो व्हाट विल बी माय रिमाइंडर? रिमाइंडर 0 होगा क्या? नहीं, 0 तो नहीं होगा. सो इफ आई डू दिस डिविजन एंड आई चेक व्हाट इज माय रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 होगा. और कोई भी ऑड नंबर लेके ट्राई करो. You can tell me any other example of odd number. कोई बड़ा odd number भी ले लो, there is no difference. इसको divide by 2 कर लो. So I will again get my remainder as how much? 1. तो यहाँ पे आप ये नोटिस करो कि odd number को जब भी हम डिवाइड करेंगे 2 से तो remainder will always be 1. 0 नहीं होगा. 0 remainder होना is not possible only. ठीक है? So here I can write no. And what about the third question? Third question में देखो क्या पूछा है. Hello, be happy. How are you doing? Good afternoon. Third question देखो, if we toss a coin, will the outcome be head? Will the outcome be a head? एक coin को आपने toss किया. Coin में you know there are 2 sides of the coin. One of them is the head and the second one is the tail. तो अगर मैंने coin toss किया तो will the outcome be a head? What can we say the answer for this one? तो 2 possibilities तो हैं कि head भी आ सकता है लेकिन tail भी आ सकता है. So here will the outcome be a head? Here we may say not sure, है ना, क्योंकि
हेड आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, इज नॉट सर्टेन। तो ये तीनों क्वेश्चन के, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन के आंसर देके हम अब समझेंगे कि व्हाट आर दीज, इसमें हम कुछ टर्म्स, व्हाट आर द एसोसिएटेड टर्म्स, दोज आई विल शो यू। ओके, नाउ इफ वी, जैसे फर्स्ट वाला जो आंसर था कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ओके लेट्स सी द फर्स्ट वन, number of sides of a square are always 4, there is no other possibility. So ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे इट इज सर्टेन। ओके, सर्टेन means it is always going to happen. What about the second one? Odd numbers divisible by 2, will the remainder be 0? यहाँ पे हमने देख लिया कि रिमाइंडर 0 नहीं हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर विल बी 1. So this type of situation is an impossible one, right? And what about the third one? थर्ड वाले में हमने बोला था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. So if we toss a coin, you know, there are equal possibilities that you may get a head or you may also get a tail. So this type of a situation, इसको हम बोलेंगे there's a chance that the situation will happen. ठीक है, now this such chances are known as probabilities. Chances that the situation will happen are known as probability. And probability कैसे फाइंड करते हैं हम? इसके लिए हमें दो चीजें फाइंड करनी होंगी. पहली तो है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. So if we toss the coin, what are the number of possible outcomes? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. So what will I say? Number of possible outcomes कितनी है? दो होंगी. Either it's a H or a T. Okay, that is H represents head over here and T represents tail. तो number of possible outcomes हो गई 2. Number of favorable outcomes कितनी है इसमें से? Favorable means which I actually wanted. तो क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था? ये देखो, will the outcome be a head? That is my favorable outcome. तो head हमें कितनी outcomes में हेड दिख रहा है? दो में से एक में ही हेड है. What does that mean? कि number of favorable outcomes in this situation is only H, which means only one outcome is favorable. Okay, so once you find both these things, okay, क्या क्या? number of favorable outcomes और number of possible outcomes, फिर हम probability find कर सकते हैं उस event की. That is, probability of getting a head will be equal to number of favorable outcomes upon number of total outcomes. तो इसका आंसर हमें easily मिल जाएगा 1/2. ठीक है, is this clear? Okay, so half थी उसकी probability. Probability of getting head was half. Similarly, probability of getting a tail will also be 1/2. Right? Clear? अब देखो, ये जो सिचुएशन थी जिसमें साइज ऑफ अ स्क्वायर काउंट करने थे, वो तो 4 होने ही होने हैं. सो सच सिचुएशंस व्हिच आर सर्टेन, उनकी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा. इट इज फिक्स्ड, और कुछ नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? जस्ट ट्राई इट. फॉर्मूला तो अभी आपको पता है कि हमें लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना. अब इस स्क्वायर में साइज 4 होना, ऐसे कितनी आउटकम्स हैं? फेवरेबल आउटकम वही है मेरी. तो फेवरेबल आउटकम दैट आई गेट 4 साइड्स इन अ स्क्वायर, दैट इज 1. एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? 4 आ सकता है आंसर. और भी कोई आंसर आ सकता है क्या फॉर साइज ऑफ अ स्क्वायर? इज देयर एनी अदर आंसर पॉसिबल? नो. मतलब पॉसिबल आउटकम भी 1 होगी. तो व्हेन आई डू 1/1 आई विल गेट द आंसर एज 1 ओनली. सो व्हाट डज दिस शो? देखो, अगेन यू कैन सी हियर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि किसी भी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी. ओके, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑल्सो एंड यू कैन चेक इट. अब देखो, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था जिसमें हमने ये बोला था इम्पॉसिबल सिचुएशन,
So can you tell me कि when the situation is impossible, what will be the value of its probability? Easily you can guess it और मुझे आंसर आप चैट सेक्शन में लिख के बता सकते हो. तो सर्टेन इवेंट की हमने लिख दी थी प्रोबेबिलिटी इज 1. थर्ड क्वेश्चन में जो हेड आने वाला था, हेड या टेल, देयर आई गॉट द प्रोबेबिलिटी एज 1/2. What about an impossible situation and a situation which is impossible, which can never happen? Like this one, given the odd numbers divided by 2, remainder 0 हो ही नहीं सकता because odd number is not divisible by 2. Sorry. Yes, very good. Be happy. That's the right answer. तो impossible situations की probability होगी हमेशा 0. That's right. And this again you can see in the video. आप इसको फॉर्मूला लगा के भी फाइंड कर सकते हो why the probability is 0. क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ पे कि आई वांट द रिमाइंडर टू बी 0. एम आई गेटिंग इन एनी सिचुएशन द रिमाइंडर टू बी 0? नहीं. तो इसलिए न्यूमरेटर मेरा 0 है और जो डिनोमिनेटर होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. सो देयर व्हाट विल बी राइट? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स वी कैन राइट एज 1. क्यों? क्योंकि एक ही आउटकम है, रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा था. ओके, 1 minute, yeah. So here the remainder was always 1. So when I will do number of favorable outcomes 0 upon number of possible outcomes, 0 upon any number is always 0. तो दो फैक्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं. कोई भी सर्टेन सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, एंड इफ द सिचुएशन इज इम्पॉसिबल देन द प्रोबेबिलिटी विल बी 0. एंड फॉर ऑल अदर सिचुएशंस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा. I hope it's crystal clear to you till here. If you have any doubt till here, then ask me. So let's see one example. बहुत ही simple सा example है. A bag contains 3 red balls, 2 white balls, and 5 black balls. Okay, and a ball is drawn at random. So, what is the probability of getting a red ball? फटाफट हम इसको solve कर लेते हैं. चेक करो, देखो 3 red balls लिखा है, तो I'm just going to write here 3 red balls. 2 white balls है, just for understanding I'm writing here, and 5 black balls. Okay. अब इस बैग में है ये सारे balls. A ball is drawn at random. So what is the probability that you will get a red ball? What do you think will be the first answer? Probability of getting a red ball. So we have to find the number of favorable outcomes and divide by the number of possible outcomes. ठीक है? Favorable outcomes कितनी है? बैग में 3 red ball हैं. Total ball कितने हैं? That will give me the possible outcomes. So what will be my total here? 5, 3 plus 2 plus 5. तो मुझे मिल गया यहाँ पे 10 balls कम टोटली इस बैग में है. तो मैं जब यहाँ से रैंडमली बॉल निकालूंगी तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट अ रेड बॉल ओनली. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ऐसे ही मैं इसको आई एम गेटिंग डिनोटिंग दिस इवेंट एज आर, दैट आई एम गेटिंग अ रेड बॉल. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विल बी इक्वल टू व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल है 3 क्योंकि 3 रेड बॉल है. And what is the total number here? Total number of possible outcomes है 10. So this is my probability of getting a red ball. Similarly, green ball की probability निकाल लो. Green ball. What will be the answer for the second question? Probability of getting a green ball. Can you tell me? फटाफट. Yes. Be happy. 1/2. किस चीज का आंसर है ये? Getting a red ball. Getting a red ball is 3 upon 10, na? Okay. Gaudru, hi. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल कितनी होगी?
इस बैग में अभी आप सोचोगे रेड और व्हाइट और ब्लैक बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल कोई था क्या इस बैग में? ग्रीन बॉल तो था ही नहीं, तो आप कोई भी बॉल निकालोगे वो ग्रीन हो ही नहीं सकता। इट इज, सो व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन इज इट? इट इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, या जिसको हम आगे बोलेंगे इवेंट। दिस इज गेटिंग अ ग्रीन बॉल आउट ऑफ दिस बैग इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो yes, be happy, right? Right, zero, very good. तो probability of getting a green ball जो कि है impossible event, impossible situation, उसका आंसर जीरो ही होगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो जीरो है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 10 है, बट दैट डजंट चेंज द आंसर, impossible event. And what will be the third answer here? थर्ड मुझे फाइंड करनी है probability of getting a ball which has red, white or black color. It can be red, it can be white or it can be black. इस ये मुझे तीनों कलर आने की क्या पॉसिबिलिटी है? So what will I write for my third answer? Yes students, or and when you're answering try to give me the question number also, because ये जो मैसेज आते हैं थोड़े से डिले होके आते हैं. So if I have 3 sub questions and you answer the second one, उसका आंसर आता है थर्ड वाले के टाइम पे, तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन नंबर लिख दोगे ना, तो इट विल बी मोर क्लियर. Yes, go Drew, 1 and be happy, 1. Very good, you'll have understood the concept very well. That's nice. So getting a ball which is red, white or black, ये तो एक certain event है. If they ask you whatever event is this, whatever situation, it's certain because बैग में है ही ये तीन कलर के बॉल. So yes, this probability will be 1. Okay, or you can also show formula से के favorable upon total. Very clear. So let's do let's see the next part. Okay, 1 minute. So let's just see the answers here, same as we had already discussed. Okay, चलो, तो ये वाला हम अभी, at least you know what is probability now. Now we have to just learn some terms, okay, which are related to probability. So let's see what are those terms, and also what is a theoretical probability and experimental probability. दो टाइप की probabilities होती हैं. Theoretical probability यानी कि we are not doing the actual experiment, ठीक है, that is theoretical. Now, what is an experiment? Experiment is the process by which an observation is made and outcome जो हम बोल रहे हैं, outcome are the possible results when the experiment is performed. So, this is very clear. When we toss a coin, I will either get a head or a tail, है ना? तो इसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ, तो इसमें एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट है whose outcomes cannot be predicted in advance. That's called an experiment. Because अगर मैंने coin toss किया, yes, be happy, cards वाली probability, yes, cards वाली probability, I think those type of questions, yes, आज के सेशन में तो नहीं है cards वाले, नेक्स्ट सेशन में होंगे, एंड मेनली वो क्लास 10 की probability में ज्यादा है cards वाले questions, है ना? ओके, तो अब देखो, इस कॉइन को टॉस किया तो एक्सपेरिमेंट, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, क्योंकि वी डोंट नो वेदर इट विल बी अ हेड और अ टेल. ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब अगर मैं आपको पूछूं, ये अनदर एक्सपेरिमेंट विल डू, ओके, सिलेक्ट अ डे आफ्टर व्हिच कम्स, सिलेक्ट द डे व्हिच कम्स आफ्टर वेडनेसडे, व्हाट विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन? कार्ड्स वाले सारे देखो, बी हैप्पी, इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो. कार्ड्स वाले भी, और जो भी क्वेश्चन होंगे वी विल डू देम, वी विल सॉल्व देम. आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है ना, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, ठीक है? थोड़े से सॉल्व एग्जांपल्स भी हम करेंगे, बट कार्ड्स वाला तो आज नहीं है जो मैंने क्वेश्चन डाला है उसमें.
Okay, so let's come back to a question. Select the day which comes after Wednesday. We know the days of the week. So if my experiment asks me to select the day which comes after Wednesday, will I have a fixed answer for this question or no? Obviously, इस question का answer तो fixed है ना, isn't it? Which is the day which comes exactly after Wednesday? Okay, actually it is like this. Which day comes exactly after Wednesday? So for this, I will have one particular answer. क्या होगा वो आंसर? वो आंसर होगा Thursday, isn't it? So this type of experiment, will this be called a random experiment? No, ये random experiment नहीं है क्योंकि इसका जो आउटकम है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका आंसर थर्सडे ही होगा. ओके, सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. ओके, देन a single performance of a random experiment performed to obtain one or more outcomes. This is what is the meaning of trial. A trial or sample space. Okay, two more terms which are very important in probability. Trial. What is a trial? A single performance of a random experiment. उसको बोलते हैं ट्रायल. जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो वो मेरा एक ट्रायल हुआ. ठीक है. And what is a sample space? Sample space is set of all the possible outcomes of this random experiment. तो इस experiment में मेरी sample space क्या होगी? When I toss a coin, my sample space will be, it's very easy, either it will be H or it will be T, head या tail, है ना? Okay, so this thing is called a sample space. और जैसे जैसे हमारे ट्रायल या हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफर होगा, व्हेन वी रोल अ डाई या व्हेन आई हैव अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो उन सब में सैंपल स्पेस फिर अलग अलग होगी डिपेंडिंग ऑन मेरा ट्रायल क्या है. ओके, देन वी हैव another important term, equally likely outcomes और equiprobable outcomes. टॉसिंग अ कॉइन में हेड आने का चांस और टेल आने का चांस इक्वल है. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इक्वली लाइकली आउटकम्स. सिमिलरली व्हेन वी टॉस अ फेयर डाई, फिर भी क्या इसमें भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगी? वी नो व्हाट इज अ डाई, राइट? डाई, डाइस, एक्चुअली डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन डाइस एंड अ डाई? कभी कभी आप देखोगे डाइस लिखा है, कभी कभी डाई लिखा है. Can you tell me इसका डिफरेंस क्या है? Yes, be happy Thursday was the right answer. चलो जल्दी जल्दी से बताओ. Let me know. दोनों का मीनिंग वैसे मैथ्स वाइज इट इज सेम ओनली. ओके, मैथ्स में हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर जनरल नॉलेज कि डाइस और डाई, कभी डाइस देखोगे कभी डाइस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? देखो, डाइस जो है दैट इज जस्ट द, अगर हम एक यूज कर रहे हैं तो हम उसको डाइस लिखते हैं. एंड इफ इट्स मोर देन वन, यानी कि वो उसका प्लूरल है, डाई. ओके, गॉट इट? चलो, तो अब देखो, इफ आई टॉस अ पेयर डाइस, सो यू नो इन अ डाइस, कैन यू टेल मी इसमें व्हाट इज सैंपल स्पेस फॉर डाइस? कैन यू टेल मी सैंपल स्पेस क्या होगी इफ आई टॉस अ पेयर डाइस? एंड फेयर डाइस, अब आप ये भी सोचोगे कभी कभी ये फेयर डाइस लिखा होता है. व्हाट डू यू मीन बाय फेयर डाइस? हैव यू थॉट अबाउट दिस? Though it is not important from the maths point of view, but still, fair dice means what? So fair means here not related to the color. Here it is the like the opposite of unfair. Fair होता है ना जो, I mean उस dice में 1 2 3 4 5 6 ये जो 66 ये possibilities हैं, जो outcomes हैं, वो equally likely होती हैं. Okay, तो वो होती है fair dice. चलो, so हाँ, where was I? हाँ, I was asking the sample space. Sample space क्या होगी when I toss a pair dice or when I toss a dice for that matter? So my sample space means क्या क्या आ सकता है when I toss the dice?
when I roll, actually toss नहीं होता है, roll a dice, sample space will be या तो मुझे 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, है ना? यही है sample space, correct? 1 minute, let me just refresh this one, है ना? ये sample space. लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि does it have equally likely outcomes? Equally likely outcomes है that it is equally likely that you get a 1, equally likely you get a 6, equally likely you get a 4. Yes, that's true. Dice may be, when we roll a fair dice, sorry, then all the outcomes are equally likely outcomes only. Okay. Wait, just let me erase this part. चलो अब आगे हम देखते हैं. Another important thing is here. So probability जो हमने बोला था, probability chapter का नाम ही है. What does it mean? It is a measure of how likely something is to happen. In simple words, probability मतलब क्या? अगर मुझे how likely something is to happen, अगर इसको मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कि चलो आज आपने कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल यू हैड अ मैथ्स टेस्ट टुडे, so now you have attempted the test and then you come home और आपको आपकी मम्मी ने पूछा कि टेस्ट में पास हो जाओगे ना, ओके, तो यू विल से यस और नो या मे बी, कुछ भी बोल सकते हो आप. तो जो भी हम बोलते हैं, इस चीज को अगर हम एक्सप्रेस कर दें इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इफ आई गिव इट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, देन दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. ओके, क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो मैं मेजर करने वाली हूँ कि हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन. So I'm going to measure it. I'm going to give it a numerical value. Okay, that is what probability actually is. So tossing a coin में अब ये probability of head is half and tail is half, that we've already seen. Okay. Now, okay, let me see here. Another very important term is event. What is the meaning of event? Yes. So event means each outcome of an experiment, yeah, collection of outcomes, that's known as an event. For example, when I roll a fair dice, then getting an even number, this will be known as an event. या फिर कुछ भी और, getting an odd number, what is the event that you get an even number? What is the event? तो वो उसका outcome है of an experiment. What is the event that you get a number divisible by 3? इन सबको events बोलते हैं. And probability of an event is number of favorable outcomes upon the total number of outcomes that we've already seen. Okay, अब देखो एक interesting चीज. यहाँ पे देखो, let's consider an event that we have to stop the spinner on red color. यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 स्पिनर्स दिख रहे हैं. ओके, अब if I want to find my event here is that I want to stop the spinner on red color. ठीक है, so what is the probability of this event? First situation में what will be the probability of stopping the spinner on a red color? यहाँ पे probability कितनी होगी? Then same thing we will find for the second one also. Government school से पढ़ते हैं. Yes, government schools very good. That is also, see, all schools are nice. बस हमें पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए. Then you can gain knowledge from everywhere and anywhere. बहुत सारे resources available हैं, free resources हैं बहुत सारे, आप वहां से पढ़ो. जैसे ये YouTube में लाइव सेशंस बहुत सारे हैं, फ्री सेशंस, यहाँ से भी नॉलेज मिलती है, isn't it? ओके, तो ये देखो, if my event here is stopping the spinner on red color, तो
जो पहला फिगर दिया है यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ऑब्वियस है कि ये पूरा का पूरा स्पिनर, मैं कहीं से भी इसको घुमाऊं ये रेड पे ही स्टॉप होगा ना। मीन्स दिस इज अ सर्टेन इवेंट, एंड सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1. So here my probability will be 1. What about the second spinner? Second spinner में what is the probability of the event of stopping the spinner on red color? In this spinner, can you see any red color? I cannot see. यहाँ पे पूरा का पूरा येलो ही है। तो इसका मतलब है ये जो स्पिनर है यहाँ पे stopping it on the red color is impossible. So you already know what is the probability of an impossible event. Yes, it is 0. Very good. Now come to the third one. यहाँ पे we can see half half है, half red है और half yellow है. So what will be the probability of this event stopping the spinner on red color? और event को हम कोई भी एक लेटर से डिनोट कर देते हैं. तो if I say R is the event of stopping the spinner on red color, तो probability of the event R ऐसे लिखते हैं इसको. This will be equal to what in my third figure? Yes, very good. 1/2 क्योंकि half red है और half yellow है. Now in the fourth and fifth figures, यहाँ पे हम एक नंबर नहीं दे सकते, लेकिन we can compare. अब third, let me show you. Okay, probability of this event will be, if R is the probability of stopping it on red color and Y is the event of stopping it at the yellow color, तो fourth figure के लिए I can for sure I can write one thing. क्या लिख सकती हूँ मैं? कि probability of the event R will be more than the probability of the event Y. है ना? Can I write this or no for the fourth one? Similarly, fifth वाले के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? Fifth वाले में yellow portion ज्यादा है, तो probability of the event Y will be more than the probability of the event R. Event R यानी stopping the spinner on the red color, right? Okay, 1/4 1/4 आप फोर्थ वाले के लिए बोल रहे हो. देखो this is not exactly 1/4. मैंने बोला ना यहाँ पे कोई exact fraction नहीं है. ये 1/4 होता तो वो fourth part दिखता. Okay, 4 parts में. Then this way it's 1/4 and ये जो remaining है ये 3/4. So this I am just writing it in comparative form. ठीक है, clear? Okay. So now I hope you are very clear. जो हमें ज्यादा से ज्यादा टर्म्स यूज करने हैं वो हमने देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं. And a very important thing you have to remember कि probability of any event will always lie between 0 and 1. यानी कि it can be greater than or equal to 0 or it can be less than या equal to 1. है ना? Probability of an event can never be more than 1 या it can never be less than 0. नेगेटिव कभी नहीं हो सकती. ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको पूछूं is this probability possible? Can event have, if I write PE is equal to 2/3, is this possible? Yes or no? Tell me. Can the probability of an event be 2/3? और फिर सेकंड में मुझे बताओ. सो यू कैन राइट द आंसर. देखो ऐसे लिखो 1, फिर यस या नो. आपका आंसर क्या है ये लिख दो. फिर 2 का आंसर लिखो यस या नो. सेकंड में आई एम आस्किंग यू कैन द प्रोबेबिलिटी बी 3/2. थर्ड वन आई एम गोइंग टू आस्क यू कैन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इक्वल टू -2/3. चलो 3 क्वेश्चन पूछते हैं जल्दी अभी इनका आंसर देखो. Yes. So probability of an event, पहले 1 minute. Okay. So
फर्स्ट केस इज 2/3 पूछा है मैंने, तो 2/3 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि इस फ्रैक्शन का आंसर लेस देन 1 ही होगा. सो यस इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, बी हैप्पी, दैट्स राइट. प्रोबेबिलिटी हो सकती है. व्हाट अबाउट दिस 3/2? सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा? यस, सेकेंड वाले का आंसर 3/2. Whenever numerator is greater than the denominator, what does it mean? कि इसका जो भी आंसर है वो 1 से तो ज्यादा ही होगा. तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो सकेगी? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. और थर्ड वाले में यहाँ पे तो आप डायरेक्टली नेगेटिव साइन जैसे ही हमने देखा, वी नो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो ही नहीं सकती. इट कैन नॉट बी नेगेटिव, फिर वो कोई भी नंबर हो. ओके, एनी नंबर, एनी फ्रैक्शन or decimal, it cannot be negative. So for my third question, my answer is no. Okay, second answer will be no. ठीक है, probability 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, and third वाला आंसर भी no है क्योंकि negative. क्लियर है? ओके, सारे के सारे आंसर यस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाला आंसर यस है, सेकंड है नो, एंड थर्ड भी नो. ओके स्टूडेंट्स, चलो फटाफट अब हम थोड़े से सॉल्व एग्जांपल्स कर लेते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं. सी, दिस इज द एग्जांपल 1. नाउ हियर व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट, यहाँ पे कॉइन को टॉस किया है 1000 टाइम्स. नाउ ऑल दिस व्हिच वी आर स्पीकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट किया है, सो ये सारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है. अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स, और जब 1000 टाइम टॉस किया तो हेड आया 455 बार और टेल आया 545 टाइम्स. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट. तो यहाँ पे दो इवेंट हो गए, एक तो हेड और एक तो टेल. सो इफ आई कंसिडर H is the event of getting a head and T is the event that I get a tail. ठीक है, probability for head will be what? Very easy. ये हमारे 2 मिनट में ही हो जाएंगे क्वेश्चंस. फटाफट देखो, इसका हम ये क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. नंबर ऑफ हेड्स अपॉन total number of trials. Number of heads मतलब number of times we get a head. Okay, number of times we get a head upon total number of trials. So what is my answer? Tell me what will be the answer for P of H. Yes, 455/1000 एकदम सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम ये भी लिख देते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी लिख देंगे. ठीक है, तो वो थोड़ा बेटर दिखेगा. इजीली वी कैन मेक आउट कि वो 0 और 1 के बीच में है. तो डेसिमल इसका जल्दी से बना दो. 455/1000 का डेसिमल. ऑब्वियसली ना, ये डिवीजन तो हमें करनी नहीं है, इसे सिर्फ हमें डेसिमल शिफ्ट करना है 3 प्लेसेस. सो इट्स वेरी इजी. 0.455. करेक्ट. ओके, क्लियर. सिमिलरली सेकेंड वाले का आंसर, व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी फॉर टेल. सिमिलर फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स आई गेट अ टेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. सो अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कैसे फाइंड करना है, ये 455 प्लस 545 करके भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसे कोई जरूरत नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट. ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इट्स गिवन हियर इट इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, तो डायरेक्टली आप 1000 को यूज करो डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, सिमिलरली आई विल गेट 545 divided by 1000, and that will give me the answer as 0.545. हो गया. देखो, दोनों आंसर 0 और 1 के बीच में है, as we had discussed. चलो एक और सम जल्दी से करते हैं. एग्जाम्पल 3 जो दिया है. So here a die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6. यानी कि die when I threw the dice, 1 कितनी बार आया, 179 times I got 1, 150 times I got 2,
157 टाइम्स मुझे 3 आया, 149 टाइम्स आई गॉट 4 एंड सो ऑन। टोटल मैंने 1000 टाइम्स डाई को थ्रो किया है, ठीक है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। तो अगर मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आउटकम एज 1, let E1 be the event that I get the outcome as 1. So what will be my P of E1? Yes, P of E1, देखो फटाफट इसमें। तो frequency of getting 1, always subjective paper में हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है। So frequency of getting 1 divided by total times the die is thrown, right? Total times the dice is thrown. So you will get the answer here 179 upon total time is 1000, question में directly दिया है। So you will get 0.179. ऐसे ही आप P of E2 if you write getting 2 on the dice. So ये देखो 150 times मुझे 2 मिला है, तो 150 upon 1000 I will get 0.15. ऐसे ही आप P, E3, E4, E5 और E6 भी फाइंड कर सकते हो, राइट? 179 में 1000, वेरी गुड। ओके, ऑल्सो राइट दिस इन डेसिमल फॉर्म। अब एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, या आई थिंक यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन actually it's very very simple. It's given in some complicated manner. On one page of the telephone directory there were 200 telephone numbers. One page, एक पेज पे टेलीफोन डायरेक्टरी में एक पेज पे 200 नंबर दिए हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट्स इज गिवन, यानी कि उस फोन नंबर के यूनिट्स प्लेस में कौन सी डिजिट आ रही है उसका एक टेबल बनाया हुआ है। यानी कि जैसे यूनिट्स प्लेस में 0 आने वाली ऐसे कितने फोन नंबर्स हैं 22। यूनिट्स प्लेस में 1 आने वाले कितने फोन नंबर्स हैं 26 उस एक पेज पे। दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग। ओके अलका, ओके ठीक है, दैट्स नाइस शॉर्ट नेम। अब ये समझ गए क्या डेटा दिया है। विदाउट लुकिंग एट द पेज पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द नंबर्स। अभी पेज है और उसमें ऐसे करके 200 कितने बोला है 200 टेलीफोन नंबर्स हैं उस पेज पे। ओके एंड आई एम जस्ट प्लेसिंग द पेंसिल ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट्स प्लेस इज 6? So I will write let the event E be that the digit in the units place is 6. So my P of E will be, देखो 6 digit की frequency कितनी है 14. So 14 फॉर्मूला लिखना है आपको, उसके बाद आप लिखोगे 14 अपॉन क्या करेंगे हम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फोन नंबर्स हियर। एक पेज पे कितने फोन नंबर्स हैं, यहाँ पे दिया है 200। Now I will just calculate 200 2 7 7 upon 100 मैं लिख दूंगी 0.07। ये है मेरा फाइनल आंसर। दिस इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ओके ठीक है। सो ऑलवेज सी आपको हर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में आपका आंसर 0 और 1 के बीच में ही होगा। ओनली इफ इट्स इन परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में करेंगे तो वो 0 और 100 के बीच में होगी, ठीक है। जस्ट टेलिंग फॉर इंफॉर्मेशन। सो वी विल सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड in our next session. Next session, Friday 2 p.m. Okay, thank you for watching and have a nice day.